चैलेंज करना। अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको इतराज़ है अटॉर्नी जनरल आगाज़ करें बात का, हाँ या ना? सवाल आपने नहीं सुना था। हाँ सर वो कर लें तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना, अभी और आप बहस ना कीजिए ना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज़ है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं। नहीं, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को और अगर उसको अलहदा सुन लिया, दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही। My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. आप किधर से हैं? My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. आप किसके लिए हैं? My lord, petitions. नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan, my lord. कौन है मुदस्सिर हसन? He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. किधर है, दिखाएं उनको। My lord, today he has, my lord, gone to Peshawar. He has a case in Peshawar. हाँ, तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं। एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर, इनको जितना शौक इस केस का नहीं है। My lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My lord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 60 minutes, my lord. नहीं, नहीं, मुख्तसर, हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं है, मुख्तसर बात कर लें तो कर लें। My lord, I would. अच्छा, आप करना चाहते हैं, और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission, I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, चलें आ जाइए। आप जी चौधरी साहब बताइए। CP20 सर। नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? अच्छा, आप किसके लिए? किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पेटिशनर है, मौजूद है। कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad. चलो, आप सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 my lord. CP20। I've already filed concise statement. ठीक। Concise statement. 20 एक से इनकी निकाल दें पिटिशन। Concise statement is 8279 my lord. CP20. ये जी, Lord, if I'm permitted, My lord, if I may, प्लीज। Lord, I'll just be reading the Act 17, my lord, before I commit my चौधरी साहब, अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उस पर बहस करना चाहें तो कर दीजिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड, मे आई माय लॉर्ड? बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. Whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process. Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2) read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose.
may be for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this act I would go to section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under section 2 for examination. And if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this section 3 is concerned, my lord. Lord, then regarding appeal, section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 1 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act. Provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so far as section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which, this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. Lord, overriding of all laws, section 8 I would read. The provision of this act shall have effect notwithstanding
anything contained in any other law, rules, or regulations of the time, for the time being, in force or judgment of the court, including the Supreme Court and the High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my Lord, by law, Constitution, as well as the precedent of this honorable court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated parliament, I must say, because it was not a parliament indeed which had to go into the amendment of the constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution petition 20 and page, my lord, I'll just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the constitutional court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true. My lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the parliament, did you write to the speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not Did me. you write to the speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the speaker. My lord, We are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the national speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My lord, Please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. one thing So please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My lord, this is not my case. It's not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again, which you may be relevant have for the assumed yourself. देखिए ये ना कीजिए. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My lord, We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the My nation. lord, 184(3) proceedings
as a matter of fact, are meant for and two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please tell us what are those. Many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन क्योंकि आप फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनैक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनैक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture, हस्बा बिल का जो केस था, इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है. ठीक है, अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट. तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए, हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था. ठीक है, तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है. ठीक है, तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया. अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया. अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है. ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए. मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं. आपने कहा कि आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी. हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली. माय लॉर्ड, मैं
ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई द एरिया विच इज़ विद इन द jurisdiction ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. ट्राइकोटमी जो है, दैट इज़ बीन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be void and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये जरा दे दीजिए. मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है. तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा. डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है. तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता, तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? अदालत देख सकती है. तो फिर ये आपका आर्गूमेंट तो ख़त्म कर रहे हैं आप खुद ही. नहीं, फिर आप आर्गूमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया. जी, मैं गुजारिश ये करूँ कि ये ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स दिस पॉइंट वाज raised by certain नहीं, वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात. अब कोई आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये फिर हल नहीं है इसका. आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है. आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप. देखिए, मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून बता. मैं ये गुजारिश करूँ, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17, ये इन क्वेश्चन है. अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन द सर्टेन लेजिस्लेशन दे आर बाय द पार्लियामेंट. इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी जुरिसडिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी. तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए. सो माय सबमिशन. अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं. जी जी. जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या
अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है। इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए। ये अदालत की आज़ादी को इससे दिफा करना चाहिए क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है। तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को। तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़ उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरा सवाल बात समझ गए, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। बिल्कुल समझ गया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बज़ाते खुद अगर फ़र्ज़ करे तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो रिलेटेबल एरिया है वो अगर उसका हिस्सा नहीं बनता, यानी अवामुन्नास और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ को एनफोर्स करने के हवाले से, तो दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर सो फार एज 184(3) इज कंसर्न्ड। सो मेरी गुजारिश है, मैं समझा नहीं जवाब आपका क्या है, आप क्या फरमा रहे हैं, मैं समझ नहीं ये पा कह रहा रहा हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस जो है, नहीं अदालती आज़ादी खुद ही हदफ है या कोई और भी मतलब इसका होना चाहिए? मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं इसको एक और पैराए से आपके सामने रखता हूँ। हाँ, देखिए, आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिफाइन करता है और उसमें जुडिशरी नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिकली 184(3) जो है, जिसमें 199 की वर्च्यूज भी बाकायदगी से मौजूद हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये एक जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू की जो है वो क्रिएट होती है फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कल पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़्यादा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना, सिर्फ आप आज़ादी या अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ जाएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि यह वो पामाल कर रही है पार्लियामान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म, इसी पे कानून दम तोड़ देगा। मैं गुजारिश ये करूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफ़ी है या इसको जोड़ना है किसी चीज़ से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक लिया। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20, उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां जो ये सेक्शंस हैं ये एटावारीज, यही कह रहे हैं ना? जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आप क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका जवाब, उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए, बस ठीक है। मैं ये गुजारिश करूँ कि बुनियादी तौर पर जो सवाल, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं और जो सबमिशन का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा और बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई विल जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स, माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं,
जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका। वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, then PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 and PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल में, लॉर्ड शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का, आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तज़किरा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गिरदाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड O है पेज 409 पे, सब हेड R है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे सेपरेशन ऑफ पावर, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड A एंड C। एक्सेस टू जस्टिस पे PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड C, पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं? PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 सर, E सब है। इंटेंट्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है C। Interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57, इसका relevant subhead है H।
Then same PLD 1999 Supreme Court 888. इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है, जी that's correct my lord. 888। जी इसका at page 905 subhead H already PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है. इसका सब C at page 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए. इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं, नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दें सब बड़ी मेहनत की आपने, जी आप माशाल्लाह। आपकी तवज्जो के लिए से नहीं, शुक्रिया। अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. ये पेज 14 ये पे पैरा 10 है. इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है. चलिए सफ़ा बता दें। 14A 14A 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है. 14 के बाद 15 है, 14A मेरे पास तो नहीं है. ये पैरा 10 है, जरा देखिए. मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है, शायद रह गया हो. पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान. पैराग्राफ 10 मिसिंग है, आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथी के पास है. किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए. चलिए वो रह गया है, तो वो वाला जगह एक सफा रह गया है, ये मैं दे दूंगा. ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं. आप जरा माइक के करीब आ जाए. चलिए सब माइक के करीब. 27 पे, हाँ 27 है, पेज 23 पे. हाँ जी 23 पे. जी फरमाइए. यह है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर. 23 पेज पे 23 लास्ट पैराग्राफ. 23 और लास्ट पैरा. ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है. ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं. द जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रॉपर power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be
contend that law was superior to the Constitution, and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 power to declare law unconstitutional. अच्छा ये देखिए ये मैं तो इससे बिल्कुल ही जी ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का द जुडिशरी डिपार्टमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़ जरा एक सेकेंड द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट टू डिटरमिन वेदर अ स्टैट्यूट बी और बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटरमिन ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड चौधरी साहब मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा चौधरी साहब अब मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया which is not good. और हम तो फिर आप separation of वो power चीज जो है, ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने साहब वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं ये किताब छपी है 1958 में जी दुरुस्त जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था जी दुरुस्त क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि with the passage of time definitely what was already flown under the bridges I would not say so because जितनी judgment उसके बाद आई उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please this book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958 मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958 जी जी this book predates martial law मैं it was I think Broi Saab regarded it as an elementary book if you look at the preface as an elementary book to teach constitutional law but it has become his magnum opus rightly so but it was published prior to martial law that's correct it has nothing to do जी मैं गुजारिश करूं आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना जरा वापस उस पे आइए ये ब्रोई साहब के पास नहीं है ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन दिस इज चांसलर केंट आई थिंक जी अभी तो मैंने ये जो है ना ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने as a matter of fact ये calling regarding it government capital G the state it means it's one of the three branches of the state it doesn't mean and these are not Broi Saab's words he is quoting someone I think ये लेक्चर है लेक्चर 20 commentaries on American law volume so and so Philadelphia बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की देखिए चॉइस साहब बिकॉज इज कोटिंग समवन ना तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है जी दुरुस्त बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वेयर एज वी नो द फेमस वर्ड्स फ्रॉम चीफ जस्टिस मार्शल इन मार्बरी वर्सेस मैडिसन इट इज द प्रोविंस ऑफ द जुडिशियल ब्रांच टू डिटरमिन एंड से व्हाट द लॉ इज that is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला आगे हमारे पास इसका भी रेफरेंस देख ली है ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे वो पढ़िए जी जी पैरा 28 जो है power to declare laws unconstitutional not inconsistent with giving effect to the will of the people ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दें तो इट्स वेरी रेलेवेंट व्हेन द कोर्ट्स ऑफ लॉ होल्ड लॉज टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल देयर डिक्लेरेशंस कैन नॉट बी construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign
that ordains and that ordains and establish the Constitution is the people. But this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor 𝐄𝐚𝐰𝐬 in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक section है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote-unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. My Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my Lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and 3 words. इकराम साहब, एक
इकराम साहब, उनको जवाब मिस्टर दे इकराम, मैं अपने प्लीज मदर साहब ये जवाब दे रहे थे मुनीर मैं साहब आपसे से। एक और चीज उसमें पूछ लूं। इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा, राइट से आपके लेफ्ट साइड, सॉरी, ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है। तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वायलेशन है वो तो आप बताइए ना। वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? What is the ultra virus? You have to point out such articles in the Constitution. उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 199 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना। मैंने ये केस बेसिकली इन ए हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा आपके सामने। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट में दिस इज द बेसिक कि द अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना। ये मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाज़त हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं। अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में ओहो बेहतर होता मैं ये कहता। तो आप ज़रा, और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं। इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है। सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए। तो बता दीजिए ना वो इसी में से कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले। ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस क़ाज़ी साहब ने। इसका चैप्टर 25 है, सफ़ा 41 पे 41। जी फरमाइए। A.R. Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये ना पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात नहीं, करने की है। ये अगली 4 लाइनें हैं। Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था, 98 का उन्होंने हवाला दिया। अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा। एडिड टू दिस पावर गिवन टू द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ ऑल लॉज where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the constitution, it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई राय भी नहीं हो सकती है। और हमारे साथी मजहर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि वो बता देना कौन सी शिक का इनकी वायलेट हो रही है फंडामेंटल राइट की। करूं सबसे पहले मैं भाई साहब एक सेकंड जी। There are 2 questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question, whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are 2 different questions. One is of competence, second is of conflict. तो आप इनको अलग-अलग बताइए कि जी competence क्यों नहीं है, और अगर competence नहीं है तो that ends the matter. You cannot do it. पहली बात तो But if there is competence, then we look at the other aspect. कि आपने कानून
पास कर दिया, but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की आर्टिकल 239 मैं एक चीज, अगर इफ दिस केस गेट्स आउट ऑफ हैंड टोटली, तो जितना वक्त आप लेंगे दूसरे पिटिशनर्स का वक्त मैं फिर उसको कर्टेल करूंगा। जी देखिए कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा, सोच लीजिए। अब ये नहीं कि आप बहुत ही बारीकियों में चले जाएं, और हम आपको बिल्कुल वक्त देंगे, मगर फिर आप तैयार रहिए रात तक बैठने के लिए आज के दिन। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मालूम होता है कि आप दूसरे हजरात को भी वक्त देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे हैव द राइट सर। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वेरी प्रिसाइजली, ये जो ओथ है इसको मैं सिर्फ 3 लफ्ज़ हैं, प्रिजर्व करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, ये इसको मैं एक हसार करार देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब आप ओथ लेते हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जो एम्बिट है उससे बाहर नहीं निकल सकते। और ये चौधरी साहब देखिए, वो सारी बातें जो आप कर रहे हैं, जैसे माय लॉर्ड ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमें उससे इतराज़ नहीं, आपने सिंपल 2 बातें बतानी है। माय लॉर्ड जस्टिस इजाज साहब ने कहा कि ये कॉम्पिटेंस है पार्लियामेंट का कि ये एक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। आपके पिटिशन में देयर इज नो ग्राउंड इन दिस, कोई आपने ग्राउंड नहीं लिया कि उनकी, यानी आप कॉम्पिटेंस तो मान रहे हैं आपके पिटिशन से हजार, लेकिन आप ये कहते हैं कि ये एक्ट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी बात है, ये बता दें कि ये फ्लॉ शिक्स से कन्फ्लिक्ट कर रही है, दैट्स ऑल। आप इतना लंबा नहीं समझ आ। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूँगा कि 239 बजाते खुद बार करता है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को किसी तरह से भी लिया नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, 39 पढ़ तो लीजिए, क्या है 239 पढ़िए ना जरा। मैं पढ़ लूँ। ये तो बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे इसका क्या ताल्लुक? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है ना, लॉ बनाने। मैं गुजारिश करता हूँ, A bill to amend the constitution may originate in the either house and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. ये इसमें बुनियादी तौर पर जो बात कहनी है वो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी के बगैर आइन में कोई तरमीम, कोई बिल मूव ही नहीं हो सकता। ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है, चौधरी साहब के पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं थी कानून